we begin, may I request everyone to confirm if my audio is clear? Please type yes in the chat box. Thank you for the confirmation. To start with, we would like to know the audience a little better. Can you share in the chat box that are you a student, a working profession, or someone exploring AI out of interest? Let's keep the session interactive, guys. Please answer the questions in the chat box. Is there any student who is also being part of this workshop? Before we begin, I would like to inform you that everyone that we have a special surprise planned for you at the end of the session. So please make sure you stay till the conclusion. You will definitely find it valuable, interactive, and something you can gain from these sessions. So, Saraja, are we good to get started? Yes, sir. Just give me a moment. Yeah, sure. Please take your time. Yes, sir. Now it's Meanwhile, my honor. yeah, go Yes, ahead, sir. please. Yeah, go ahead, please. Sorry, my bad. It's my honor to introduce our esteemed speaker for today's session. Mr. Anand Mehta is a senior FinOps AI specialist at NASDAQ and an AI, AWS community builder with extensive experience in cloud strategy, FinOps, and AI driven transformation. He has previously worked with leading organizations such as Capgemini, DXC Technology, Polaris Consulting, and IBM, contributing to large scale cloud modernization and cost optimization initiatives. Mr. Anand holds multiple advanced certifications, including FinOps practitioner and focus analyst, AWS solutions architect, professional, AWS DevOps engineer professional, AWS AI practitioner, and many more. He is also a frequent speaker at major tech events like DevFest, AWS Community Days, Cloud Community Day, and several national conferences. We are honored to have him with us today. Please join me in welcoming Mr. Anand Mehta, sir. The, the stage is yours. Thank So you, now you Shalaja. can continue. Yeah, thank you, Shalaja, for the nice introduction. Appreciate the efforts over here. So Thank you. let me
Let me do one thing. Let me come on camera if that's okay to everybody. Yes, sir. Okay. Uh, may I request the team to come on camera as well, if you all are comfortable. Anybody who is comfortable to come on camera, please do come on camera, as it will help us to be more interactive while in the next couple of minutes, rather, I should say. Thank you, Mayank Prakar Sav, right? Okay. So total, how many we have, right? 17, including me. Shailaja, is that right? Yes, sir. Okay. So I can see from the chat, uh, some of them have confirmed as student exploring AI, working professionals. It's a mix, right? In this 15 total audience group. Okay. So Mayank and Prakar Sav, whom I can see on the camera, would like to know a little bit about yourself to get started, like anything specific that you're looking at in the next 1 hour, 60 minutes tentative from this particular session, where I can be of some help to all of you. Any one of you can speak. Mayank, Prakar. Am I audible? Mayank, Prakar. Yes, sir. Yes, yes, Thank you sir. for the acknowledgement, Mayank. How about you, Prakar, and others? Those who are not able to come on camera, it's absolutely fine. But let's be let's Audible, sir. thank you. Let's keep acknowledging to each other, because this being a virtual session, uh, it sometimes it's difficult to understand, like, where are we heading towards? Like, are we on the track? Is it meeting your expectations or not? So it's all virtual world, right? So if at all this session would have been in person, it would have been a altogether different scenario, right? So far, uh, this year, whatever sessions that I have given in 2025 are mostly in-person sessions across India in different locations, which includes Bhopal as well, in addition to Bangalore, Pune, Mumbai, Gujarat, Kolkata, and so forth, right? As Shailaja was mentioning. Okay. How about us? Can I see some reactions, at least from the other team members who are there onto this call? I can see Samruddhi is there. Shivansh, Akash. Feel free to unmute yourself and speak up. Uh, so, how I comfortable you are request in? Yeah, go ahead, please, Shailaja. I request all the participants to please be interactive in the session. The session is all about for you and for yourself. You can learn from the mentor and our guests. So please be interactive and you can ask questions to him directly. And this session is beyond of AI. Correct. So primarily, this session is inclined more towards AI. So that's why I wanted to really understand from each one of you: are you at the beginner level, or at the intermediate level, or at the advanced expert level from the AI usage perspective? Because as we all know, right, this era is all about, in the last few couple of months or a year or two, this is all about, everything is all about era, right? Any discussion that we go get into, or any conferences, any sessions that we uh, that where we are a part of it, right? Without AI discussion, it's incomplete. I hope you all agree to this point, right? And that's why we thought, let's have AI as the starting point to for this particular uh, session, I would say. Sir, I am a beginner for AI. Okay. How about you, Prakar? Sir, intermediate levels. Okay. Not a beginner, not an advanced level. Okay.
So would you be fine if I start with a very basic fundamentals or very basic definitions? Would that be okay to you all? Or would it be like a very basics and then I should, okay, let me do one thing. Let me get started with a very basic fundamentals definitions, and then we'll slowly uh, get into the next level based on the inputs and the feedback that we'll keep getting while during this particular discussion. Is that okay to all of you? I can see who else are there. Yes, so 90% of all are at the beginner level only. So Okay. we can go ahead with that. Mayank, Mohit, Prakar, Sachin, Samruddhi. Samruddhi, you are, if you are listening, any inputs, any thoughts from your side, please? Vinny Solanki, I can see as well. Okay. Uh, Let me get started by sharing my screen. 1 second, please. Entire screen. Also share all audio outputs. No. Please let me know once you are able to see the screen of mine. Yes, sir. Yes, sir, it's visible. Okay. Since we have just less, even not even we are not even having 20 candidates, right? So let me take a pause over here for 2 minutes, and I would like to request you to have a look at this particular slide, the very first slide of mine, which speaks a little bit about while. Uh, 1 second, sorry about that. Uh, it's Shailaja, right? Who helped me in Yes, sir. getting started. Okay. So while Shailaja has already introduced a lot about myself, so I would like to get started with this first slide of mine, which speaks a little bit about myself again on top of it. So as Shailaja was mentioning, right, myself, Anand Mehta, I am one of the community builder for almost over a decade now. I started my cloud journey starting in 2014, and I am very fortunate to keep myself uh, in and around cloud related assignments till date starting 2014, and that makes me uh, uh, that makes me proud to say that I was even able to upgrade my skills to such an extent that I am able to call myself as multi-cloud certified hybrid solution enterprise architect. And while I am an hybrid solution enterprise architect, I am also working as a senior FinOps specialist in one of the esteemed multinational organization, which is a US-based organization, of course. Uh, and when I say I'm working as a FinOps specialist, not sure if how many of you are already aware about this particular skill set that I'm currently working on, which is known in the market industry as the FinOps era, right? FinOps AI. Uh, has anybody heard about FinOps by any chance? Any one of you? A simple yes, no, it's fine. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, cool. Uh, so I'll come to that particular topic where my area of specialization is and which and where I'm currently working on. And as you can see, like these are some of my active certifications, right from FinOps focus analyst, practitioner, AI practitioner, and couple of AWS certifications and GCP as well. And the reason of getting into multi-cloud is uh, it helps me to give my best to my end customers, because customers is are to make sure that we are able to gain the confidence of our customer is the primary goal, right? We all agree to it, whether we are a student or we are into professional career area. uh, it's very important for us that for whomsoever we are
working or supporting, they are satisfied to the maximum possible extent from our side, because they look at us as a trusted advisor, and that's why they come to us for guidance and for mentorship, right? And without we keeping ourselves upgraded with the latest skill sets running in the industry, uh, we will not be able to justify that all. And that's the reason that I keep myself updated with getting myself with at least some of the certifications, uh, uh, getting known into the industry as and when it comes, right? Like for this year, I was aware that FinOps certification had a lot of value and was gaining a lot of traction. So I made sure at the starting of this year itself in 2025 that I need to get myself FinOps certified, if not to at least one. However, fortunately, I was able to crack two certifications in the FinOps world. Okay. And this is the LinkedIn QR code which I'm highlighting over here on this particular first slide deliberately, because I sincerely want each one of you, if you're not yet connected with me, please do scan or take a photo of this particular QR code. Connect with connect with me on LinkedIn as well. Be connected and let's continue our learning journey. Please don't take it otherwise that I'm doing a marketing of my own by publishing the QR code of this LinkedIn. Uh, the reason why I'm saying it so confidently is because from last few couple of years, I myself have seen that while we are on LinkedIn and while we are connected with the different experts in different areas who are related to our field, uh, we get some or the other help directly or indirectly, right, in multiple ways, right? And it helps us to grow as well as it helps others as well to grow together with us. Like, and that's why we sometimes call as like we are here for the community and by the community, right? And that's where we sometimes feel proud also to say that we are a community builder, because as the logo, as the statement goes, right? We are here for the community and by the community, right? So let's continue our learning journey together. And one of the easiest ways to be connected on LinkedIn. How many of you are already connected with me on LinkedIn from this 20? I believe, other than who are from the Tech for Radio uh, organizing team. Is anybody Sir, two have raised their hands, Akash Uttam and Mayank Sani. okay? So are they already connected or they are yet to connect? Let me, how do I come back to this slideshow? I'm not able to see the screen. How do I go back? Uh, So you can zoom out Zoom out. Uh, from the current slide. it's going the other way around, right? Okay, thank you. Sorry about that. So at least from here, I can see the chats as well. No, where is my chat? Okay. Those who are already connected with our guests, they can raise their hands right now. Or rather, so only Mayank and Akash are connected, right? How about others? If not, please do connect if you're comfortable with. Okay, that's what I'm trying to say over here. I'll tell you the reason as well why I'm asking you to be connected, right? I'll show you means I'll show you on the screen as well. It will it will help you a lot for sure. Okay. Let me go back to the screen. So our topic, and first of all, thanks to the team, right, Shalaja and team for this excellent uh, publishing of this agenda and so forth, right? So while my slides are not that good like this, and since I like this very much, I put this I as onto my first slide itself. And thank you, Shalaja and team, for this.
Uh, where do I Hello, get sir. started? Sorry, is anybody saying something? Sir, there after the meeting that we have get a certificate also. I'm not sure about that, but let Shailaja and the team You comment on will that. get to know in the end of the session about all the informations you are asking for. Okay. Um, where do I get started? So you So can start that. how many of you are how many of you are in the final year? Is there anybody who is there in this group in final year? Prakar and Akash and one, right? How many of you are in third year? Okay. So for those who are already in final year and third year of their education curriculum, the initial 10 minutes would be might be very fundamental to you, uh, but that's fine, right? So let's take that as a refresher for you, for those who are already aware about the basic definitions and the basic concepts that will help us to get into the AI session, right? Like the topic of our interest, which is nothing but introduction to LLM, prompt engineering, agents, MCP, uh, and MCP, right? So these are the four key topics which we are planning to cover in this particular uh, session, right? So let me take a step back, right? So if you see, like on which particular tech stack the industry, I mean to say the IT industry, all the enterprise customers related to IT were working, right? Almost a 2 decade before, right? I'm talking about the traditional environment, right? So almost 2 decades before, at least when I started my career into the IT industry, we were all working in traditional on-premise environment, right? So when I said traditional on-premise environment, it was all uh, about the ecosystem where we were being required to pay uh, upfront from the infrastructure perspective, and then we used to get started from there, right? However, in the late 90s, I'm referring to like, yeah, late 90s, like 97, 98, when the internet came uh, and the cloud era started, right? So uh, the traditional working environment got uh, moved into the cloud ecosystem, right? So we all know what are the different benefits of cloud, right? I'm believing, I'm hoping so. We all understand what are the different benefits of clouds and so forth, right? The first and foremost important is pay per use model, right? And on demand, right? We don't have to pay anything upfront, and then we have to pay per use, only similar to what we pay for the electricity at home, right? So at the end of the month, we get a bill and we pay for the usage that we have incurred, that we are responsible and we are owning for, right? And that's where the cloud era started, right? Now, uh, why the cloud era means for okay, I am sure each one of you would agree to a point that for something new to come, there has to be a certain limitation, certain restriction, right? uh, with the existing ecosystem, right? For an example, when I was referring to traditional on-premise environment was the what was the primary limitation, disadvantage of that working in a on-premise traditional environment? It was like we were being asked, or we were being required, forced to make all the payment upfront, right? There was a very high initial investment that was required to be done upfront, right? And that is one of the limitation which got overcome when we started working into the cloud world, right? And then when we got into the cloud world, we came across different acronyms, different technology, different skill sets, uh, right? And we are still getting ourselves familiar with the new skills as well. Like AI is one out of that, right? I would not say it is new, but still we are in the learning phase as far as AI is related, right? Like before era, what were the common skill set that we were currently working on? Uh, Anybody would like to speak up? I can help you to get started. DevOps was the one.
or it is still the one, right? DevOps, MLOps, AIOps, what else? Machine learning, DevSecOps. DevSecOps, right? What else? DevOps. Right? DevOps is there, correct, right? C, C++. We started with learning with C, C++, Java, .NET, and then in the cloud world, we came across the terminologies and acronyms like what I just mentioned, right? DevOps, DevSecOps, and uh, migrations. When I say migration, it is like on-premise to cloud migrations. It could be your AWS, Azure, GCP, or any of the CSPs, right? When I say CSP, what do you mean by CSP? Cloud service provider. When I say CSP, I am referring to the cloud service providers. The top three cloud service providers are AWS, Azure, GCP. Of course, we have others as well, like IBM, Oracle, Alibaba, and so forth, right? But let's restrict to few only for now. So, and whosoever, a decade before, if I see, whosoever was working on an on-premise traditional environment, they started uh, migrating to one of the CSPs, or it was a mix of different CSPs in addition to the on-premise environment, right? So we have already come across the different jargons like what are the different cloud deployment models, right? IaaS, PaaS, SaaS, uh, and what else? So and when I say migrations, uh, so it could be in a, okay. Let me take a step back. Like again, what are the different cloud? What are the different types of clouds, right? Public cloud, private cloud, hybrid cloud, uh, community cloud. So these are nothing but the different types of cloud. And when I see from the deployment perspective, it is IaaS, PaaS, and SaaS, right? So I hope you all are comfortable with all these basic jargons and skills. So I'll not be spending much time over here, but just as a refresher, I'm telling the different cloud types are public cloud, private cloud, community cloud, and the hybrid cloud. When I say hybrid cloud, it is a mix match. It's a mix combination of both on-premise as well as the different combinations of the CSPs. It could be one or it could be multiple. Okay. And then again, one important term that you all should be familiar and comfortable with is like the migration, right? When I'm saying that all the companies, all the customers, almost everybody, if we see today, are have already migrated onto the cloud or already onto the process to either one of the cloud, or it's a mix and match of the different cloud service providers. When I say are in the process of movement or have already moved means I am referring over here the term which we know as migrations. Have you heard about migrations? If not, I would I would sincerely request you to have a quick look at the different articles published on different platforms, websites, including on LinkedIn as well, which is a professional social media platform. So you will get a lot of articles around it, like what are the different migration strategies, right? They basically you will see 7 R's, right? 7 R's is like rehost, refactor, re-architect, retire, retain, and so forth, right? So these are the different migration strategies, right? So even before somebody decides that I need to go on to XYZ CSP or a mix of different CSP, he or she or that entire core team does a high level of or I would say a detailed level of due diligence that helps them to decide with a compelling reason as to why they should move on to particular CSPs and what deployment models they should adapt for, uh, and how soon they should get into it, right? So all these things they come to know with a due diligence revolving around these different migration strategies. Okay. And sometimes you would have also come across uh, the different stakeholders speaking in the lines like I'm into application modernization journey or cloud transformation journey or migration journey and so forth, right? So
you need to understand all these jargons, right? When somebody is saying application modernization journey, what exactly is trying to say when he's saying application uh, modernization or transformation or a cloud migration journey, what exactly they are trying to say and what exactly they are doing it under each of these particular buckets. Are you there with me so far? हिंदी में बात करना पड़ेगा. I think we should Yes, sir. start in हिंदी. हिंदी में चालू करें, right? Yes, sir. वो better रहेगा सबके लिए. नहीं, मैं अभी पहले पल्स देख रहा हूँ यहाँ का, मेरे को 10 मिनट उसी में जा रहा है, बट इट इज एब्सोल्युटली फाइन. आई वांट द टीम टू इंटरेक्ट. ओके, आई कैन स्पीक ऑन फॉर द, मतलब मैं बोल सकता हूँ पूरा दिन भर, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता मैं बोल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई सिंस यू, आप लोग सब संडे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो, यू आर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, यू शुड गेट समथिंग आउट ऑफ इट. ऐसा ना हो कि मैं बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ और आपको सब पता हो. प्लीज स्पीक आउट. इफ यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स, प्लीज लेट मी नो so that we don't spend time over here. Guys, please interact with our guest as our guest is already saying that you can interact with them freely. सारे वेबिनार्स में ऐसे नहीं मिलता है गेस्ट से डायरेक्टली अपनी क्वेरीज करने का. सो इफ यू आर गेटिंग दैट चांस, प्लीज टेक दैट चांस. चलो मैं थोड़ी देर के लिए अभी हिंदी में स्विच होता हूँ. आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू जस्टिफाई माय रोल ओवर हियर. मैं ये सब इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एआई में जा सकता हूँ, राइट? मैं सीधा इंट्रोडक्शन टू एलएलएम, एआई, एजेंट्स, एमसीपी, ये सब मैं बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आई एम ऑलरेडी शेयरिंग माय स्क्रीन. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे स्लाइड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन भी है. सो इट्स नॉट लाइक आई एम ट्राइंग टू जस्ट गेट थ्रू दिस टाइम स्लॉट. ओके, तो मेरे पास सब कुछ रेडी है, बट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ अभी यहाँ पे कि वी ऑल आर ऑन द सेम पेज बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू इट. ओके, मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, मेरे पास में और एक दूसरा प्रैक्टिकल तरीका भी है. मैं ऑलरेडी ओपन कर रखा हूँ. लेट मी शेयर दैट एज वेल. सो प्लीज डोंट गेट इनटू दैट इंप्रेशन कि वी आर नॉट रेडी विद द कंटेंट. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मेरे पास एक स्क्रीन भी रेडी है, विच आई कैन शो इट टू यू. ओके, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चेंज किया जाए, राइट? चलो ठीक है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चेंज करना है दोस्तों. कुछ बोलो भाई बहनों, कुछ तो बोलो. मैं आपको ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें देखो, आज के डेट में एआई सीखना कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, it's not a rocket science to learn AI or to get a mastery into AI. Most important thing for us is to understand the core of it, right? The fundamentals of it as to why AI came, why it is booming in the industry, and why it is very likely to continue in the next at least couple of years. 26, 27 में पक्का रहेगा. तो ऐसा नहीं है कि एआई एआई सब लोग एआई में काम कर रहे हैं तो मैं भी एआई करूंगी, मैं भी एआई करूंगा, उसमें मैं काम करूंगा. वो तो सब लोग करेंगे पक्का. ठीक है, अगर जो नहीं कर रहा है आज, वो कल पक्का करेगा, वो पक्का करेंगे या करेगा या करेगी, जो भी है. ठीक है, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वैसे आज के डेट में जीने के लिए या इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए एआई आना बहुत जरूरी है. डू यू एग्री विद दिस? अरे हाँ बोलो, नहीं बोलो, कुछ यस तो सर. बोलो. नहीं, शेला जा छोड़ के, शेला प्लीज गो ऑन म्यूट. शेला जा की आवाज नहीं चाहिए. सॉरी यार फॉर दैट. नो किधर गए इश्यू यार? सर. सॉरी यार शेला जा प्लीज. माय नो बैड. इश्यू सर. I should not speak like this, but I am requesting Shalajata to let's give others also chance, right? बोलो भाइयों, दोस्तों, बहनों, कुछ तो बोलो. ये कहाँ गया यार अपने, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है. एनी रिस्पॉन्स? बड़ा मुश्किल है. मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. Due to AI, some companies doing layoff. Very good. I like this point. चिन्ना, thank you. और कोई?
मुझे कुछ नेगेटिव सुनना है मेरे अपने बारे में या किसी और चीज के बारे में, बिकॉज आई लाइक लिसनिंग नेगेटिव्स। ठीक है, उससे मजा आता है। जैसे इन्होंने बोला, कहाँ लिखा है, ड्यू टू yeah some companies doing layoffs. Okay, this that okay, let me pick up this point in the interest of this, in the interest of the time. Thank you, Chinna, for this. Okay, so if I go back to the slides, so that is my first point, right? कहाँ पे मेरा slide किधर गया? You are able to see my slides, right? So this is the answer to your question. Okay, so please don't be afraid. एआई से डरने की जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट बी अफ्रेड दैट एआई आ गया तो मेरा जॉब का क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, right? So all those, please come out of those misconceptions, right, or the myths, right? Because as per, not only as per the, मैंने ये quotation अभी लिया है, देखो, okay, just read this statement: AI won't replace humans, but humans with AI will replace humans without AI. Okay, इसका मतलब क्या है कि हम जो सोच रहे हैं कि जो कंपनीज में जो ले ऑफ्स हो रहे हैं वो एआई के कारण हो रहे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कंपनीज जो ले ऑफ कर रही है वो एआई एआई के कारण ले ऑफ नहीं कर रही है। Companies and the industries are giving sufficient amount of time to everybody to upgrade their skills on AI. If somebody is not upgrading their skills, or somebody is not making himself or herself AI enabled, then definitely there is a risk, and he himself or he herself is responsible if something unwanted is happening with them, right? So that is why we are saying AI won't replace human beings. We are still required, and we will continue to be working as we are doing today. The only ask from everybody is to make ourselves AI enabled. We need to make ourselves equipped with AI skills. When I say AI, artificial intelligence. क्योंकि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे एआई स्किल से, कोई और बंदी आएगा, बंदी बोलेगी ठीक है, आई विल अपग्रेड माई सेल्फ विद द एआई स्किल्स, एंड दे विल कंटिन्यू फॉर द upcoming projects and the assignments, right? Because definitely everybody would like to see working efficiently and in a more productive way. Do you agree or no? Yes, sir. कौन नहीं चाहेगा एफिशिएंटली और प्रोडक्टिव काम करने में, प्रोडक्टिविटी लाने में कौन नहीं चाहेगा? हर कोई चाहेगा, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, irrespective of whether we are into IT industry or non IT industry. Even in personal life, we all like to see ourselves working efficiently and productively, right? अगर आपको घर से कॉलेज जाना है so definitely you will always prefer to go as fast. You would always prefer to reach to your college or to your destination wherever you want to go on that particular day as fast as possible, as quickly as possible, in an efficient and a productive way, right? Do you agree with this or not? Right? चलो, इससे भी एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ। चलो, अगर मुझे आज संडे, राइट, बहुत लोग बोलेंगे चलो ये 4 बजे के बाद हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, आनंद सर ने बहुत बोर कर दिया, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते शॉपिंग मॉल में, हम लोग कुछ शॉपिंग कर लेते, थोड़ा खा पी के वापस आते हैं, राइट, चिल आउट करते हैं, राइट। बहुत लोग बोलेंगे ये ग्रुप में, पक्का है, मुझे मालूम है। ठीक है, अभी नहीं, बाद में बोलोगे। तो आप क्या करोगे? मार्केट में जाओगे, मतलब शॉपिंग मॉल में जाओगे, शॉपिंग करोगे, लेकिन वहां पे भी आप जब जहाँ पे भी जाओगे, मान लो से फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई ड्रेस लेना है, राइट, एज एन एग्जांपल, तो आप एक ड्रेस देखोगे नहीं, आप दो ड्रेस देखोगे नहीं, यू विल, अनलेस एंड until you are convinced and satisfied, and if you see that you are getting what you want, uh, you will continue searching in one shop or multiple shops within that shopping mall. Do you agree with this or no? You agree, right? Hello.
Hello. So, people are replying in the chat box. You नहीं can नहीं बोल सकते scroll हो. Let that them down. come. Let them unmute, please. Let them unmute. Let them speak. Okay, sir. आप बोल सकते हो बिंदास. Let's keep it interactive. ये रिकॉर्डिंग अपने अगर रिकॉर्डिंग हो रहा होगा मुझे मालूम नहीं. अगर रिकॉर्डिंग हो रहा है भी है तो कोई टेंशन नहीं है. अपने पास ही रहेगा. It will not get into any of the social medias for sure. I trust the team. Okay, Sir, because Korean हाँ बोलो बोलो भाई. Yes, Mike, please speak out. in the AI we grow career in the life. क्या बोल रहे हो? In the AI we can grow career. हाँ तो मैं क्या बोल रहा था नहीं, जैसे अगर शॉपिंग मॉल में जा रहे हो तो मैं क्या बोल रहा था, आप कोई एक शॉप पे नहीं जाओगे राइट कपड़े खरीदने के लिए. आप 4 जगह जाओगे, दुकान में जाओगे, देखोगे, कलर पसंद करोगे, साइज देखोगे, प्राइस देखोगे राइट. अगर आपको लगता आपको एक ड्रेस पसंद आ गया लेकिन अगर वो बोल रहा है कि 10,000 रुपए का है तो बोलेगा नहीं यार 10,000 महंगा हो गया, तो लेट्स सी सम अनदर ड्रेस. तो हो सकता है आपको वही ड्रेस सेम क्वालिटी सेम कलर दूसरे शॉप में आपको 8,000 में मिलेगा, कोई 6,000 में देगा राइट. तो जहाँ पे आपको क्वालिटी और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अगर कोई ड्रेस मिल रहा है with the price that you are looking out for, then only you will go for it, right? You right. तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं? क्वालिटी as well as the price, right? So price is also one of the important factor applicable in the projects and the assignments that we work in an IT industry as well, right? Suppose हम लोग कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बहुत सारे बोला ना, डेवऑप्स के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, या कोई डेवऑप्स के प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, या एआई के प्रोजेक्ट में मैं कोई काम कर रहा हूँ. तो वहां पे भी आई डोंट हैव टू सी, मतलब मुझे सिर्फ वहां पे आर्किटेक्चर या सॉल्यूशन या सिर्फ मुझे कोडिंग नहीं देखना होता है, मुझे वहां का कॉस्ट फैक्टर भी देखना होता है राइट. कि ऐसा आप एक कोई एप्लीकेशन बना रहे हो राइट. सपोज आपको एक मोबाइल ऐप बना रहे हो, कोई एंड्रॉइड ऐप बना रहे हो. आपने ऐप तो बहुत अच्छा बना लिया लेकिन अगर उसको मार्केट में आते आते अगर वो बहुत महंगा हो गया तो वो एप्लीकेशन कोई खरीदेगा नहीं राइट. तो आपको वो एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी टॉप क्वालिटी के रखना है, as well as you have to make sure that it is in the reach of the customer right, ताकि वो खरीद सके right. अगर अगर मान लो I'll give you one example right. uh, अभी आप कॉलेज में जाते हो, अपने अपने क्लासेस में जाते हो, आप अटेंडेंस देते होंगे राइट. अपने अपने क्लास में अटेंडेंस देते होंगे मे बी. तो हर एक का अटेंडेंस लिया जाता होगा ऑन अ डेली बेसिस और वीकली बेसिस. तो अटेंडेंस अभी कैसे आप कैप्चर करते हो? मैन्युअली करते होंगे या मैन्युअली करते होंगे, आई एज्यूम कि वो मैन्युअली होता होगा राइट. तो वो मैन्युअली We take इंस्टेड ऑफ, manually then upload. हाँ वो मैन्युअली करते हैं फिर वो सिस्टम में अपलोड करते हैं जो भी करते होंगे राइट. इंस्टेड ऑफ दैट अभी एआई टेक्नोलॉजी यूज करते, एआई टेक्नोलॉजी यूज करके यू कैन take the attendance of the entire class irrespective whether it is 100 200 or thousands, just by facial recognitions or just with xyz recognition. You can capture the attendance of the entire class within few seconds or within a minute or two maximum right. So that's the power of the technology that you can use, and that is nothing but using AI right. I'm just giving an example right. तो अभी आपको अगर ये, तो आपका जो ऐप आप जो बना रहे हो तो मेक इट एज एन एआई अनेबल्ड, या फिर अगर आप कोई मोबाइल अगर आप यूज कर रहे हो, मोबाइल का कैमरा अगर आप यूज कर रहे हो to capture the attendance of the students or the professionals working in the companies right. तो जो भी आप ऐप जो आप मोबाइल में डालोगे राइट, तो वो ऐप की फंक्शनलिटी अच्छी तो होनी चाहिए, साथ में महंगा भी नहीं होना चाहिए. मेरा बोलने का मतलब वो है ताकि सब लोग उसको एफर्ट कर सके और ले सके आपसे और उसको यूज कर सके. So you have to consider the cost factor as well, which is very important in the IT industry, right? तो मैं ये कॉस्ट और प्राइसिंग फैक्टर बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देर इज अ टर्म मैंने यूज किया था कि आई एम वर्किंग एज ए फिनॉप्स स्पेशलिस्ट राइट. तो फिनॉप्स जो एरिया जो है ना, डिओप्स में क्या होता है पता है क्या? व्हाट इज डिओप्स? डिओप्स इज बेसिकली a skill with the help of which you can
where the operation team and the development team work together. Do you agree with this? A very simple definition of what is DevOps. DevOps is nothing in traditional environment, traditional ecosystem में क्या होता था? Everybody were working in silos, right? कोई अपना डेवलपमेंट टीम और वो इंजीनियरिंग टीम, ऑपरेशंस टीम, टेस्टिंग टीम, क्वालिटी टीम, सब टीम अलग अलग काम करती थी। कौन के एक दूसरे को, एक टीम को ये नहीं पता था कि अगला वाला मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि ऑपरेशन डिलीवरी मेंटेनेंस टीम को ये नहीं पता होता था कि डेवलपर ने क्या डेवलप किया, और डेवलपर को ये नहीं पता था कि ऑपरेशन में जाने के बाद में कैसे मेंटेन होता है। तो एवरीबडी वर वर्किंग इन साइलोज, राइट? सो दैट वाज द मेन लिमिटेशन ऑफ वर्किंग इन ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट। तो उसको ओवरकम कैसे किया? DevOps, which is nothing but a culture again, right? So with the help of DevOps, the operations team and the delivery team started working together, right? अब DevOps ने ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट का लिमिटेशन जो था उसको ओवरकम किया। अभी DevOps का भी अपना एक लिमिटेशन था या है। वहां पे आप बोल सकते हो कि DevOps was still following the software development life cycle, right? Do you agree with this or no? राइट? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज करके DevOps का जो भी पाइपलाइंस हम लोग बनाते हैं यूजिंग डिफरेंट टूल्स, वो हम लोगों ने बनाना चालू किया, राइट? अब DevOps के कुछ लिमिटेशंस ऐसे थे जिसको ओवरकम करना जरूरी था। तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट कॉस्ट फैक्टर जो था, मेरा जो प्रोजेक्ट बन रहा है, मेरा जो एप्लीकेशन बन रहा है, एट द एंड ऑफ द डे वेदर इट इज विद इन द बजट और नॉट, वी यूज टू कम टू नो ओनली एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और प्रोडक्शन में जाने के बाद में। तो दैट वाज क्रिएटिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट टू द बिजनेस, राइट? तो सब लोग क्या बोले कि लेट्स स्टार्ट कंसिडरिंग द कॉस्ट फैक्टर एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इटसेल्फ। तो इसीलिए वो कंसेप्ट आया है फिनॉप्स का। तो व्हाट फिनॉप्स क्या बोल रहा है कि include the FinOps culture, the framework, right from the very beginning of the software development life cycle, so that the cost is also considered on top priority while you are in the requirement designing phase itself, right? So now we understand what is the how and where the traditional environment ecosystem was working, DevOps क्यों आया, फिर बाद में अभी हम लोग जैसा FinOps क्यों आया। FinOps इसलिए आया ताकि हम लोग कॉस्ट जो फैक्टर है उसको we are considering it at the initial beginning of the life cycle itself, right? Now, next, let's come into AI now, looking at the time now. अभी SDLC, Software Development Life Cycle, पहले हम लोगों ने बहुत देखा, right? Everybody are known or familiar with the Software Development Life Cycle. अभी जो नया पिछले 2-3 सालों से अगर अभी आप सुन रहे होंगे, instead of calling it as a software development life cycle, we are saying that we are working in AI development life cycle model or the approach. Do you agree? आपने सुना है AI DLC approach? Good, great. तो AI with the help of मतलब हमारे जितने भी अभी जहां जहां पे भी हम लोग AI यूज कर रहे हैं या AI के प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे अगर किसी ने पूछा कि हम कौन सा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर इट विल बी AI डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट? बहुत सारे साइकिल्स डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। पहले SDLC था, फिर बीच में अजाइल अप्रोच आया, फिर वाटरफॉल आया, एंड अभी हम लोग जो बोलते हैं विच यू नो इन द इंडस्ट्री एज AI DLC। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना। यू कीप एक्सप्लोरिंग इट, राइट? यू कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग इट, एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन डेफिनेटली लुक एट माय, इसलिए मैं आपको बोल रहा था लिंक्डइन, मेरे लिंक्डइन में बहुत सारे पोस्ट है, या यू कैन विजिट यूट्यूब्स एंड other social medias as well, where you will get good tutorials on what is AI DLC, how it is different from SDLC, what is the difference between waterfall model, agile model, and so forth, right? So this is nothing but something which will help you to understand and get a grip on understanding of the different development life cycle that we all are following for last few decades, starting from traditional SDLC to AI DLC. Okay, are you there with me so far? ठीक है, so I'll just so uh, so please make sure that you don't have that myth or misconception that companies are laying off because of AI, right? Because as I'm repeating it again, AI won't replace humans, but the humans with AI will replace humans without AI. And that is why we need, and how do we get started with AI?
is to play around with it, right? Take any one case study, start uh, implementing, start working on that particular case study or scenario on your sandbox. Sandbox क्या होता है? आपका development environment. Okay. तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि the best way to learn AI is to get started with sandbox and start playing around it, right? And once you're comfortable with it, then slowly and gradually you can start pushing your respective AI enabled projects or the POC up to the production environment and make it accessible to all the end users you are looking out for. Okay. Are we there so far? Are you all there with me so far? Yes, sir. What is the benefit of this meeting? क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? What is the benefit of this meeting? Benefit of this meeting? Sorry, I did not get it. What is it? Those who are attending this meeting, what is the benefit? Acha, those who are attending this meeting, Uh, actually, the purpose of this particular session is to get you introduced to what is LLM, large language models, get you an understanding around what is an agent, get you an understanding around what is prompt engineering, get you an understanding around what is MCP. When I say MCP, it is Model Context Protocol. When I say LLM, it is large language models. When I say prompt engineering, आपने देखा होगा अभी पिछले कई महीनों से या पिछले एक दो सालों से the requirement of prompt engineers has increased drastically, exponentially. Almost one of the other requirement that comes in the uh, in the job role description is that they are looking out for prompt engineers, right? So what do you mean by prompt engineering? Are you comfortable with those skills? Is was one of the intention is one of the intention of this particular session was to make you aware about those areas as well, right? Like MCP, model context protocol, कहाँ पे यूज होता है model context protocol, क्यों यूज होता है? पहले भी तो हम लोग काम कर रहे थे विदाउट एमसीपी. ऐसा क्या है एमसीपी में जो हर कोई चाहता है कि हम एमसीपी में काम करें? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एमसीपी? व्हाट आर द एडवांटेजेस, disadvantages of MCP, LLM, prompt engineering, agents, and so forth, right? So the purpose of this meeting was to give you an understanding. Does that help to you? Does that answer to your question? Yes, sir. Okay. अगर आप बोल रहे हो कि you are already aware about all these jargons, terminologies, and all those things, I'm happy to hear that. Take it as a refresher. That's it. And I'm sorry that I'm not yet started on those topics. I'll start it in a minute or two from now. Okay. I was just trying to give you some background to understand the pulse of this audience. Okay. So let me keep moving. तो एक मैं आपको थोड़ा फॉर अ चेंज, राइट? और बाकी लोगों से कैसे आवाज नहीं आ रही? लेडीज, एनीबॉडी देयर इन दिस ग्रुप अदर देन शैलजा, प्लीज? चलो ठीक है, I'll keep moving. Let me show you one thing, right? Let's start with the prompt engineering for a change, right? For the next 5 minutes, I'll go to prompt engineering. So what is prompt engineering? किसी को पता है? Okay. आप बोलोगे तो बहुत अच्छी बात है. Quickly, anybody quickly wants to speak on what is the prompt engineering? ठीक है, अगर नहीं कोई बात नहीं, आपको पता है, मुझे मालूम है. सो टेक दिस एज अ रिफ्रेशर. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? अभी मैं एक्चुअली 1 घंटा पहले वही कर रहा था, कुछ ये मैं आपको दिखाता हूँ, राइट? सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैन बी डन यूजिंग any of the tools available in the market, right? Some of the most popularly used tools in the markets are like Microsoft के तरफ से है Copilot है, गूगल के तरफ से जेमिनी है, और चैट जीपीटी आई एम श्योर सब लोग यूज करते हैं कि नहीं करते? Yes, sir. चैट जीपीटी सब यूज करते, राइट? तो यू कैन हाँ, तो चैट जीपीटी, व्हाट इज चैट जीपीटी? इज इट एन एप्लीकेशन और व्हाट इज इट, और इज इट एन एलएलएम?
It is a tool. It is an application. You can call chat gpt as an application. Okay, which uses gpt, right? वो जो gpt है, that is your llm. तो your मतलब ओके, आई गो वन बाय वन. तो जैसे चैट जीपीटी है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से को पायलट है, गूगल गूगल की तरफ से आपका है जेमिनी है, amazon aws की तरफ से amazon क्यू है. सो दे हेल्प यू अ लॉट इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट? व्हेन आई से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब क्या, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. मैंने थोड़ा सा टेस्टिंग करके रखा था. तो अभी आप में से कोई एक बोलेगा कि अरे यार सर तो बहुत बोर कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया कुछ बोले ही, 1 घंटा 45 मिनट्स हो गया कुछ बोले ही नहीं अभी तक, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था आज का, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट विथ रैग, राइट? अभी आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता रैग होता क्या है, राइट? तो मैं बोल रहा हूँ कि ओके, मैं को पायलट, ये मेरा को पायलट है, राइट? यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन एवरीबॉडी? कोई एक जन यस बोल दो प्लीज, इंक्लूडिंग शैलजा. ओके, ओके, थैंक यू. तो मैं को पायलट ओपन किया. अब मुझे पता नहीं कि रैग होता क्या है. बेसिकली रैग का फुल फॉर्म क्या होता है? रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन. इज दैट राइट? यहाँ पे अरे ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है सामने, मैं क्यों ऊपर देख रहा हूँ. रैग का फुल फॉर्म क्या है? रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, राइट? अब मुझे पता नहीं ना उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, और मुझे उसके बारे में जानना है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये को पायलट को बोला एक्सप्लेन, ये मेरा प्रॉम्प्ट हो गया, राइट? प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में मैं उसको बोल रहा हूँ कि प्लीज हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रैग, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, विथ अ डायग्राम स्टेप बाय स्टेप. तभी उसने मेरे को देखो क्या मेरे को आउटपुट दिया नीचे. देखो व्हाट इज रैग, उसने यहाँ पे क्लियरली लिखा इज एन एआई आर्किटेक्चर दैट कंबाइंस रिट्राइवल. मतलब वो रैग क्या करता है? इट fetches the information from the database and based on the information that is retrieved from the database, it generates the output and gives the back to the end user. मतलब मैंने पूछा उसको, मेरे को रैग के बारे में इंफॉर्मेशन दो, तो को पायलट क्या कर रहा है, उसके पास में जो नॉलेज रिपोजिटरी है वो बैकएंड में उसको क्वेरी करता है. हम लोग को पायलट को नहीं कर रहे क्वेरी, मतलब हम लोग को पायलट को कर रहे हैं, लेकिन को पायलट का जो उनका जो इंटरनल जो फंक्शनलिटी है वो क्या करता है, इंटरनली उसके डाटाबेस में जाकर सर्च करके, मतलब रिट्राइव करके हमको डाटा जनरेट, नया हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वो जनरेट करके हमको वो आउटपुट देता है. तो आउटपुट क्या मिला हमको, ये देखो. तो यहाँ पे आप देख रहे हो वाई रैक कंपोनेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये पूरा मेरे को आंसर यहाँ पे मिल गया. और यहाँ पे उसने स्टेप बाय स्टेप उसने मेरे को बता भी दिया कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. मतलब यूजर ने क्वेरी किया, वो क्वेरी एनकोड होके, मतलब क्वेरी किसको किया, को पायलट को किया. को पायलट ने क्या किया, उसको एनकोड किया, नॉलेज बेस में जाके रिट्राइव किया. रिट्राइव करने के बाद में वो कॉन्टेक्स्ट को रिट्राइव कर, मतलब वो कॉन्टेक्स्ट को रिट्राइव करके एलएलएम मॉडल यूज किया है इंटरनली. ठीक है, बिना एलएलएम मॉडल यूज किए इट विल नॉट बी एबल टू जनरेट द रिस्पॉन्स फॉर यू, राइट? और फिर बाद में वो आपको फाइनल आंसर दे रहा है, राइट? एलएलएम क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ओके, so there are hundreds of LLM already available in the market. The only thing is you should know which LLM is used for what purpose, where to use, when to use, how to use it. Okay, हमको LLM नहीं बनाना है. LLM मार्केट में ऑलरेडी बने हुए हैं, हमको जाकर सिर्फ उसको यूज करना है. Got it, everybody? This is just an example. इसको बोलते हैं prompt engineering. Okay? Hello? ठीक है, तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. मैं देखता हूँ इसमें मैंने और भी कुछ दिया है क्या. देखो अब ये बोल रहा है, देखो वुड यू लाइक मी, अब वो अपने को खुद भी बोलता है. देखो अभी उसको, वो इतना इंटेलिजेंट है, को पायलट इतना इंटेलिजेंट है, उसने मेरे को सारे स्टेप्स तो दे दिया. उसके बाद वो मेरे को बोल रहा है कि डू यू ऑल्सो वांट टू सी दिस स्टेप्स इन द डायग्राम, इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम. तो मैं क्या बोल रहा है, यस प्लीज प्रोवाइड मी विद अ डायग्राम एज वेल. तो वो मेरे को नीचे डायग्राम भी बना के दे रहा है. देखो, यूजर क्वेरी, एनकोडर, रिट्रीवल, रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट, एलएलएम एंड फाइनल आंसर, राइट? तो इसीलिए आप देखोगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का रोल और रिक्वायरमेंट मार्केट में अभी बहुत ज्यादा आ रहा है. पहले 2-3 साल, अभी भी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पहले कैसा होता था, डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए, डेवसेकऑप्स इंजीनियर चाहिए, एंटरप्राइज सोल्यूशन आर्किटेक्ट चाहिए, राइट?
उसी तरह से इन द लास्ट 1 year 2 year इन एडिशन, ओके, वो रोल अभी खत्म नहीं हुए. In addition to DevOps engineer, DevSecOps engineer, solution architect, enterprise architect, QA डेवलपर्स हो गए, टेस्टर्स हो गए, ऑटोमेशन इंजीनियर्स हो गए, इनके साथ में इन एडिशन टू दिस अभी जो नए रोल्स, जो नए जॉब डिस्क्रिप्शन अभी जो आए हैं, जो आपके लिए अभी यूजफुल होंगे फ्रॉम द करियर पर्सपेक्टिव वंस यू आर आउटसाइड ऑफ कॉलेज और इवन व्हाइल यू आर इन द कॉलेज फॉर द कैंपस इंटरव्यू, you should be ready with the prompt engineering role as well, or as an AI practitioner, right? You should know what is AI, where it is used and how it is used. Are you there with me? तो ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी आप मेरे को बोलोगे कि रैग और ट्रेडिशनल एलएलएम में क्या फर्क है, राइट? तो देखो, ट्रेडिशनल जो पहले भी होता था, आप जैसे अभी एआई तो अभी अभी सुन रहे हो ना आप, एआई डीएलसी एंड ऑल, 1-2 सालों से सुन रहे होंगे. उसके पहले मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग सब हुआ करता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो हाउ दैट ट्रेडिशनल एलएलएम इज डिफरेंट फ्रॉम रैग आर्किटेक्चर, तो उसका कंपैरिजन अगर आपको चाहिए तो आप एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट वहां पे बोलो कि आई नीड अ कंपैरिजन बिटवीन दिस टू एंड यू विल गेट इट, राइट? आपको पीपीटी फॉर्मेट में चाहिए तो सिर्फ उसको आप बोलो कि मुझे पीपीटी फॉर्मेट में चाहिए, तो वो आपको पीपीटी बना के भी दे देगा. ओके, नाउ आई विल टेल यू वन सीक्रेट. ओके, आर यू देयर विथ मी सो फार? दोस्तों, Yes, यू आर sir. देयर? और बाकी लोग? अरे कहीं है कि नहीं कि सब लोग छोड़ दिए, बोर हो गए, ड्रॉप आउट हो गए क्या? अरे नहीं सर, वेरी गुड सेशन सर, कंटिन्यू प्लीज. चलो, थैंक यू यार, एक्नॉलेज करते हो तो हमको भी अच्छा लगता है, कोई सुन रहा है करके. ठीक है, तो नो डाउट सर. नाउ आई विल गिव यू वन सरप्राइज. ओके, ये जो मैंने पीपीटी बनाई है, मालूम है, मैंने 12:45 को वेदांत सर के साथ में बात किया. 12:45 को वो बोलते आनंद अपने को 2:30 को सेशन लेने का है. मैं बोला मेरा पीपीटी तो रेडी नहीं है. अरे सर, कैसा करोगे आप, कैसा सेशन लोगे, सब लोग ज्वाइन करने वाले हो. तो यू विल नॉट बिलीव दिस पीपीटी, मैंने ये जो पीपीटी है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, ये जो पीपीटी जो बनाई है ना, ये मैंने आधे घंटे के अंदर बनाया है और मैंने कुछ भी नहीं किया है. मैंने प्रॉम्प्ट दिया है. ओके, मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसा होता है और क्या करना है, राइट? तो ये जो सारी जो पीपीटी जो स्लाइड्स जो बने हैं ना यहाँ पे, ये सारे स्लाइड्स विदाउट आई राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड. ठीक है, मैंने ज्यादा दिमाग नहीं, मैंने दिमाग लगाया थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला, और ये स्लाइड्स मेरे को मिल गए विद इन 30 मिनट्स. ओके, तो अपना जो पर्पस था आज का सेशन का, वो मेरे को मेरा जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो मेरे स्किल्स है वो मैंने यूज किया और मैंने ये पीपीटी बनाया. दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, with the help of prompt engineering, with the help of AI skills, you can work more efficiently and more effectively, more productively. ठीक है, तो जो काम आप पहले 10 घंटे में करते थे, आप उसको अभी कुछ घंटों में कर सकते हो. एंड यू कैन स्पेंड योर रिमेनिंग टाइम इन योर अदर इनोवेटिव assignments or exercise, or even you can uh, fulfill your dreams, right? In addition to your regular job or regular assignments in your colleges that you are doing, right? आपको अगर कुछ पैशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके कॉलेज में कुछ आपको असाइनमेंट मिला है, वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अगर बनाना है, राइट? तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में हमको एटलीस्ट 1-1 महीना लगता था डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए. हम पूरा दिन रात एक करके और डॉक्यूमेंटेशन बनाने में 1 महीना लगा देते थे. But now in your case, just upgrade yourself with basic AI skills and get the basic framework of basic outline of your documentation ready within few minutes with the help of AI skills. I mean to say like Copilot, ChatGPT, or मैंने और क्या क्या बोला, जेमिनी और Amazon Q and so forth, right? जो भी अदर टूल्स आपके पास अवेलेबल है, आप उसे एक ढांचा बना के ले लो और उसके बाद आप उसको फाइन ट्यून करो. ठीक है, तो मैंने ये जो स्लाइड्स मैंने जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से बनाए, मेरे को आधे घंटे में बन गए. बट स्टिल आई वाज रिक्वायर्ड टू स्पेंड एडिशनल 30 मिनट्स ऑन माय ओन ऑन दिस ड्राफ्ट,
so that I can fine tune it and make it in line with our requirement for this session requirement, right? आपको 100% आपको वो बना 100% तो आपको नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, बट आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40 to 50% आपका जो फ्रेमवर्क है वो आपको कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एंड दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, नाउ is it clear what is prompt engineering? Okay, now Yes, let sir. me for a change, I'll show you one diagram. Okay, मैं थोड़ा सा इधर उधर जा रहा हूँ ताकि आपका माइंड थोड़ा इधर उधर स्विच होता रहे। मुझे आपका इंटरेस्ट पता चलेगा, आपको डायग्राम पसंद है या थियरी पसंद है या प्रैक्टिकल पसंद है या स्लाइड पसंद है। सो दिस इज अ वेरी गुड स्लाइड अकॉर्डिंग टू मी। इसको मैं स्लाइड शो कैसे करूँ? F5 फंक्शन F5, हाँ, अरे सॉरी। ठीक है, अभी हम, अरे यार एक मिनट, सॉरी फॉर दिस। अब मैं डायग्राम में जाता हूँ, राइट? पेज डाउन प्रेस कीजिए सर, पेज डाउन से वो जंप करेगा पेज टू पेज। पेज डाउन, अच्छा पेज टू पेज, मेरे को लास्ट में जाना था एकदम। एंड बटन प्रेस कर सकते हैं सर। हाँ, ये डायग्राम दिख रहा है, वैसे दिख रहा है क्या? पता दिख रहा है आपको डायग्राम? टेक्निकल में मत जाओ, Yes, sir, सिर्फ it's visible. हाँ हाँ, सिर्फ ज्यादा हम लोग टेक्निकल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आई एम ट्राइंग टू यूज अ डिफरेंट अप्रोच नाउ टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एजेंट, राइट? व्हाई मैंने ये डायग्राम अभी क्यों निकाला यहाँ पे, वो स्लाइड्स में जाने के बजाय आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एजेंट, राइट? व्हाट इज एन एजेंट ओवर हियर? ओके, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर क्या करना है, मैं यही एग्जांपल लूँ या दूसरा कुछ लूँ? चलो ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। इंश्योरेंस, राइट? मेडिकल इंश्योरेंस मुझे अगर निकालना है, राइट? वेरी सिंपल एग्जांपल। मेरे को अगर एक अपना मेडिकल इंश्योरेंस अगर निकालना है, तो देर आर मल्टीपल वेज, राइट, टू गेट और टू टेक द मेडिकल इंश्योरेंस, राइट? One of the approach that I generally or I would like to take is by going through an agent. Okay, for some XYZ reason, right? कुछ there कुछ मेरा personal compelling reason है because of which I am going through a medical agent, right? Who gives the medical insurance, right? तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे दोस्त को कॉल करता हूँ, हु इज अ मेडिकल इंश्योरेंस एजेंट। उसका मैं कॉल करता हूँ, यार मेरा मेडिकल इंश्योरेंस मुझे चाहिए, मेरे फैमिली के लिए चाहिए, मुझे इसमें आपका हेल्प लगेगा, प्लीज कम टू माय हाउस एंड लेट्स गेट दैट फॉर्मेलिटी डन। तो वो एजेंट क्या करता है, वो मैं उस he takes an appointment from me, he comes, visits to my house, I give all the details which is required to get me a medical insurance, वो सारा information collect कर लेता है, फिर वो and he goes back to his office, does all the formalities and gets me a medical insurance which is valid for a year or two based on the policy that I have taken, right? This is a very simple example of an agent, right? तो ये मैंने आपको रियल टाइम एग्जांपल बताया। नाउ यू कैन कोरिलेट द सेम थिंग इन our real time in our IT related projects as well, right? Say for example, क्या करना है? As a student, right? You all are college students or some of you are professionals, right? So let's take an example of a professional now, right? So suppose if I am working as an employee in XYZ company, right? So definitely at the end of the month, I need a payment, right? I need payment, payment from the company for the work that I have done for that entire month, right? So हालांकि हर कंपनी में एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरोल सिस्टम होता है या पेरोल डिपार्टमेंट होता है, who takes care of all those things and they ensure that the payment gets processed and it is credited into my account on the last day of the month or the first day of the next month, right? तो अभी ये तो मैन्युअली हो रहा है, राइट? मतलब एक पेरोल डिपार्टमेंट है, वो सब पेरोल रिलेटेड काम कर रहा है मैन्युअली,
process kar raha hai, and then they ensure that it is getting credited, right? Now imagine a scenario where you like to get all of this thing automated, right? Instead of going through all this process manually from the payroll department side, you want everything to happen with a matter of with just a matter of click, right? I mean to say in an automated way. तो आप क्या करोगे? You will automate, you will develop a code, you will develop an application in such a way that all this uh, all these activities done by your payroll department or payroll team uh, is handled in a automated way, और एक workflow आप बना देते हो, right? एक workflow मतलब एक flow बना देते हो, and you develop a code, you develop an application. Basically मैंने actually proper term यहाँ पे use करना चाहिए. यहाँ पर आपका काम कौन करेगा? प्राइमरीली आपका जो ऑटोमेशन, आपका जो ऑटोमेशन टीम है, आपके पास कोई बंदा या बंदी रहेगा हु इज रिलेटेड टू डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ ऑटोमेशंस, राइट? या आपके पास एक टीम रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डेवऑप्स टीम या डेवसेकऑप्स टीम. उनका यही काम होता है टू ऑटोमेट ऑल दिस मैनुअल एक्टिविटीज एंड गेट इट automated so that the entire end-to-end workflow happens in just one click without any manual errors. Okay, तो once that automation is done, उसको हम लोग फिर क्या बोलते हैं कि मैंने पेरोल का एक एजेंट बना दिया, या मैंने जैसा मेडिकल इंश्योरेंस का एक एजेंट का मैंने एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया है. सो एजेंट का मतलब वही होता है कि एजेंट इज समथिंग दैट हेल्प्स यू टू work in a very proactive automated fashion rather than a reactive slow approach, right? Manual approach, right? Now there are different type of agents available in the market, right? For an example, आपने सुना होगा AI and generative AI, right? So what is the difference between AI, generative AI? Or you would have also heard about the term called as generative AI and agentic AI, right? सुना है कि नहीं? Have you heard about the term called as AI, generative AI, agentic AI? What is the difference? What is the basic difference between these terms, right? So I'll just help you in a nutshell at a very high level definition. AI, AI, हम लोग सब सुनते, right? Artificial intelligence, right? So what is the basic definition of artificial intelligence? So artificial intelligence, at a very high level, you can define it is like you query something and you get the response from AI system uh, based on the based on your query. Whatever it gets, it goes back to the uh, knowledge base that it has, and it gives you the data back, right? Because every AI system is trained with the specific knowledge base or specific database. आपने कोई क्वेरी किया, वो अपने डाटाबेस में जाएगा, सर्च करेगा, अगर उसको डाटाबेस में, अगर उसके नॉलेज बेस में अगर वो एआई को सिस्टम को अगर मिलेगा, तो ही वो आपको रिस्पांस देगा कि वो क्या, वो मैं अगर उसको क्वेरी करा व्हाट इज माय नेम, वो एआई सिस्टम जो बोले, वो एआई सिस्टम उसके डाटाबेस में चेक करेगा कि अगर मैं जो क्वेरी कर रहा हूँ आनंद नाम से कुछ एंट्री है कि नहीं है. जैसे ही वो मैच होता है, it will give me the response back as saying your name is Anand Mehta. अगर नहीं है तो बोलेगा sorry, I did not find it, right? So this is the basic task of an AI, right? Basic AI system. Now then what is generative? तो ये उसका लिमिटेशन हो गया, right? AI को अगर उसके database knowledge base में मिलेगा तो ही वो response कर पाएगा, नहीं मिलेगा तो बोलेगा sorry, I am not able to get it, right? I am not able to find it, कुछ आंसर आपको देगा. तो ये उसका एक तरह से लिमिटेशन हो गया, राइट? नाउ तो फिर इसीलिए आप देखोगे कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज जनरेटिव एआई. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ जनरेटिव एआई? सो जनरेटिव एआई, the base of generative AI is, of course, it is AI, but in addition to searching the knowledge base and the database from which it has got trained, it also has an additional capability to generate a new content and give the response back to you. So basic difference समझ में आ गया? What is the difference between AI and generative AI? Generative AI has the capability of generating new content on top of what it receives from the knowledge base and the database it has got trained.
अनलाइक एआई, राइट? एआई जो डाटाबेस से मिलेगा वही आपको देगा, नहीं मिलेगा तो नहीं देगा। जेनरेटिव एआई क्या करता है, डाटाबेस में सर्च करता है, उससे जो उसको इनपुट रिस्पांस जो मिलता है उसके बाद वो अपने खुद के एल्गोरिथम्स लगा के आपको रिस्पांस देता है बैक। So that is what a generative AI is from the definition perspective. Now, now when we work with generative AI skills, right? Just remember one point. Not every time is it that you will get all the responses correct and accurate the way that you are expecting. Do you agree? इसीलिए वो टर्म आपने सुना होगा, हेलुसिलेशन, राइट? So it is not always 100% correct. So whenever you are working with generative AI skills or generative AI tools, right, make sure that you validate the responses that you get back from the AI system or the generative AI tools. Okay, and this is where the human comes. Human plays a very important role. Now coming back to that very basic uh, uh, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि don't get afraid about AI coming into picture and so forth, right? Humans will still be required to do the final, to do the, to take the final decisions end of the day, right? AI will, AI will help you to work efficiently to expedite the tasks that you are currently working on, but definitely you will also be required to be a part of it. एंड जैसे अगर आप, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, कोई भी एप्लीकेशन, अगर कोई फाइनेंशियल, इंश्योरेंस या बैंकिंग एप्लीकेशन है, यू इट it's very rare, it's almost you will not come across on a single scenario where that application will get deployed into production deployment without manual intervention. जब भी आप बोलोगे कि मेरा application is ready to be production deployed, there will always be human experts who will go through it, take a glance at it. Once they are satisfied, only after that they will allow the team to deploy it or to push it to the production only after their approval. Okay, so human experts are still required. We are still required. Okay, is it clear so far? ओके, Yes, sir. तो मैं अभी ये जो आप जो डायग्राम यहाँ पे तो देख रहे हो ना, सो ये एक्चुअली देखो, यहाँ पे कॉस्ट एनालिसिस एजेंट दिख रहा है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एजेंट दिख रहा है, फिनॉप्स सुपरवाइजर एजेंट है, और ये बैकएंड में वो पूरा एल्गोरिथम LLMs और ये सारे मॉडल एग्जीक्यूट करता है, और आपको ये इंफॉर्मेशन देता है। क्या बोला था आपने यहाँ पे? यहाँ पे ओके, ठीक है। तो अभी ये जो एग्जांपल है ना, okay, this is related to AWS, but similar kind of diagrams will come across in Azure, Microsoft Azure और GCP as well, right? तो ये पर्टिकुलर डायग्राम यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स बना बना के रखे हुए हैं। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, this particular architecture is helping us to make sure that whatever services that we are using on the cloud, irrespective of whether we are using AWS or Azure or GCP services, right? All the resources are being getting utilized in the best optimal way, in a very cost effective way. And who is taking care of it on behalf of manual intervention? ये सारे एजेंट्स बना के रखे हैं। देखो, ये कॉस्ट एनालिसिस एजेंट है, ये क्या करता है, इट विल गो इनटू द बैक एंड, पूरे सिस्टम में जाके चेक करता है, ठीक है, और और आपको आउटपुट देगा बेस्ड ऑन योर क्वेरी, राइट? आपने बोला, आपने वो कॉस्ट एनालिसिस एजेंट को बोला कि आई वांट टू आई वांट टू सी द analysis of last 30 days, 90 days of the cloud spend that I am doing. Okay, it could be from AWS, Azure or GCP, and how it is looking like, right? ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या कैसे हो रहा है? I want to see everything in a dashboard. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैन्युअली, मैं ये कॉस्ट एनालिसिस जो मैंने ऑटोमेशन मैंने यहाँ पे जो बना के रखा हुआ है, उसको मैं उसको सिर्फ ट्रिगर, मैं उसको ये सिर्फ क्वेरी करता हूँ, इट गोज इनटू द बैकएंड, गेट्स द डाटा एंड गिव्स बैक द रिस्पांस टू द यूजर, ठीक है? तो अभी ये जो एजेंट है, राइट, ये जैसे कॉस्ट एनालिसिस है और ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एजेंट है, राइट, इसका पर्पस अलग, इसका पर्पस ए है, इसका पर्पस बी है, राइट? तो दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। तो अभी ऐसे बहुत सारे एजेंट होंगे, राइट? आपके जो एप्लीकेशन है, ऐसे डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन और योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, आपने मान लो अगर 10 एजेंट बना लिए, राइट,
सो फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट? सो अगर आप एक एजेंट बनाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल एजेंट सिस्टम। अगर आप मल्टीपल एजेंट्स बनाते हैं, मतलब 10 एजेंट्स यहाँ पे बना रहे, तो हम लोग उसका क्या बोलते हैं, मल्टी एजेंट सिस्टम। तो तो एज ए यूजर विल यू बी सेंडिंग अ रिक्वेस्ट? अभी मान लो अगर ये यूजर कौन है यहाँ पे, फिनॉप्स सुपरवाइजर एजेंट, राइट? तो फिनॉप्स एजेंट इसको भी रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको भी रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट? तो फाइनेंस यूजर क्या कर रहा है, मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सुपरवाइजर एजेंट को बोल रहा है कि मेरे को ये सब डाटा ला के दो, लेकिन सुपरवाइजर एजेंट क्या बोल रहा है, ओके फाइल, आई विल टेक इट। लेकिन उसको पता है कि इंटरनली उसको दो डिफरेंट एजेंट से बात करके वो डाटा लेना है। हो सकता है यहाँ पे दो है, वहां पे 10 भी हो सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट दिस सुपरवाइजर एजेंट इज डूइंग ओवर हियर इन दिस केस आर्किटेक्चर इज, यहाँ पे वो एपीआई कॉल करता है। ओके, एवरीथिंग इज एपीआई ड्रिवन नाउ। अगर आप एआई वर्ल्ड में अगर आप काम कर रहे हो, एआई डीएलसी एरा में अगर आप काम कर रहे हो, so everything is API based. Okay, so whatever information that you need from the backend team or from the third party tools or third party applications, right? So what you are being expected to do is to just make an API call to those third party tools or the applications, and that API call will fetch the data from it and then it will give you back the response, right? तो जैसे मैंने ये सुपरवाइजर एजेंट से मैंने, मेरा एरो किधर गया, ये इसको मैंने एक एपीआई कॉल किया, ये दूसरा एपीआई कॉल किया, अगर 10 होंगे तो मेरे 10 एपीआई कॉल जा रहे हैं, राइट? और वहां से वो डाटा लाके मैं यूजर को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। नाउ अभी अगर ये फिनॉप सुपरवाइजर एजेंट यहाँ पे नहीं होता, तो एज अ फाइनेंस यूजर मेरे को 10 एपीआई कॉल करना पड़ता था, राइट? जैसे यहाँ पे दो एजेंट है तो दो एपीआई कॉल करूंगा, अगर 10 एजेंट्स है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो एज ए अगर मेरा ये सुपरवाइजर एजेंट अगर नहीं होता तो मैं 10 एपीआई कॉल कर रहा होता, राइट? एंड इफ आई एम मेकिंग 10 एपीआई कॉल्स टू फेच द डाटा, राइट, फ्रॉम दिस डिफरेंट 10 डिफरेंट एप्लीकेशंस, तो मेरे को टाइम भी ज्यादा लगेगा, रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो everything will be like not in line with the design and the requirement, business requirement, right? Do you agree with this so far? Hello, did I lose you? Hello, Yes, sir. बाकी लोग समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, तो एजेंट्स क्या काम करता है? सो बेसिकली इट इज ऑफलोडिंग द वर्क, मैनुअल वर्क दैट वाज गेटिंग डन इन द बैक एंड, राइट? उसके लिए आप एजेंट्स बना सकते हो। बेसिकली एजेंट बनाना मतलब क्या, आप उसको ऑटोमेट कर रहे हो, ठीक है? तो जहाँ मल्टीपल एजेंट्स आते हैं ना, तो वहां पे आई कैन insert instead in between the user and in between the agents, I can introduce, instead of this supervisor agent, I will introduce one additional layer called as जहाँ पे मैं बोलूंगा MCP server, right? Model Context Protocol. So what is MCP? Any idea? तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ दिस सुपरवाइजर एजेंट, मतलब ये सुपरवाइजर एजेंट बोलने के बजाय मैं क्या बोलूंगा, ये सुपरवाइजर एजेंट के अंदर मैं एक एमसीपी सर्वर लगा दूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। एंड दैट, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल? इंस्टेड ऑफ यू एज अ यूजर मेकिंग 10 एपीआई कॉल्स टू 10 डिफरेंट एजेंट्स टू फेच द डाटा between from between 10 different applications and third parties, you will make a call to just one MCP server, or wo MCP server will coordinate with will internally coordinate with the 10 different applications and the integration endpoints. It will fetch the data on behalf of you, and then it will give the response back to you. So instead of you making 10 API calls, you are making just one API call and getting all the information that you need in a much more efficient and a productive way, right? So that is the main advantage of MCP. मैंने बहुत simple language में बोला हूँ, but it is very important, very critical in all your AI related projects that you will come across, and anything that is following an AI DLC approach. ठीक है? तो मैंने आपको बोला था, राइट, जनरेटिव एआई मैंने बताया था कि इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग द न्यू कंटेंट्स, राइट? तो आप ये जो मेरा सुपरवाइजर एजेंट जहाँ पे मेरा एमसीपी बैठा हुआ है, राइट, एमसीपी सर्वर बैठा है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल,
तो इसको मैं जेनरेटिव एआई बोल सकता हूँ क्या? आई वुड नॉट प्रीफर टू कॉल इट एज अ जेनरेटिव एआई. उसके लिए अपने पास में एक अलग टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंटिक एआई. So any ecosystem which is using MCP server or based on this particular architecture ecosystem that I just explained to you, right? So you can call them as agentic AI based application. So what is the difference between agentic AI application and generative AI application? आपको generative AI तो पता है कि it is capable of generating the new contents, right? But again, that is a रिएक्टिव अप्रोच. बराबर है? वो रिएक्टिव अप्रोच है. रिएक्टिव अप्रोच मीन्स पहले वो जाएगा, देखेगा, फिर वो अपना नॉलेज, अपना खुद का इंटेलिजेंस उसमें इनकॉर्पोरेट करके फिर आपको रिस्पॉन्स देगा. सो इट इज कॉल्ड एज अ रिएक्टिव अप्रोच. वेयर एज एनी एप्लीकेशन, any applications that you work using agentic AI, they are reactive based. Reactive based matlab they are adaptable, they are flexible, they are dynamic, they are not that they don't have those many constraints that you generally come across while using generative AI applications. Okay, कुछ ज्यादा हो गया क्या? Hopefully yes. तो अभी आप ये स्लाइड थोड़ा थियरी भी पढ़ लो. अरे यार फिर से इधर आ गया क्या? क्या बोला था आपने? कंट्रोल एंड राइट? कंट्रोल पेज डाउन भी नहीं जा रहा है यार, सॉरी. हाँ ये देखो, आर यू एबल टू सी माय स्लाइड? अभी आपको थोड़ा, अभी बहुत हो गया इधर उधर, अभी मैं आपको थोड़ा स्लाइड्स के थ्रू ले जाता हूँ, राइट, सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू. तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, आर यू एबल टू सी द स्लाइड्स एवरीबॉडी? आई एम अज्यूमिंग यस. तो आप यहाँ पे देखो कंटेंट जनरेशन, राइट? जनरेटिव एआई यूज केस टेक्स्ट जनरेशन, images, audio, video, code generation is a use case of generative AI. Whereas agentic AI में wherever you need dynamic content creation with work within workflow, मतलब जहाँ पे आपका workflow आ गया, you can use agentic AI. Okay, simple, याद रखने के लिए. And agentic AI are context aware task executions. Okay, ये दो तीन चीजें आप ध्यान रखो. And okay, chatbots, customer देखो, chatbot is an example of again generative AI. Whereas in a simple language, wherever there is a workflow orchestration required, you have to go with agentic AI. Simple words में, ज़्यादा theory में नहीं जाता हूँ. ठीक है? I'll move to the next slide. What is MCP? MCP is an open context for connecting AI models to external tools and data. MCP, where and why it is used, right? So basically it is used for standardization, real-time access, security and scalability. Shall I move ahead? ये आपको कंटेंट चाहिए था, I can create a post and share it on LinkedIn. This should not be a problem. ठीक है? What are the advantages, disadvantages of MCP? मैंने आपको वो को-पायलट दिखाया था, राइट? तो जहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे थे, राइट? तो को-पायलट का भी अपना खुद का MCP सर्वर है, which we called as a को-पायलट स्टूडियो. ओके, जहाँ से हम लोग ये सारे वर्क फ्लो वगैरह डिजाइन करके ऑर्केस्ट्रेट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है? So let us take a quick glance at it. LLMs, right? So what is LLM? Can somebody acknowledge you are able to see the screen? Yes, sir. ठीक है? तो LLM is a clear specific prompt and context yields specific prompts and context yield based results, defined roles and boundaries. So LLM is works on a defined role and boundaries, whereas prompt engineering, you give a specific prompt to the tool and it will give you back, it will give the response back to you, right? Our बहुत powerful tool है. Please use it extensively as much as possible. What is RAG? Retrieval augmented generation, right? So it will give you real-time data and it reduces hallucinations. So what do you mean by hallucinations? Something, some information which is not accurate, right? Something that needs human intervention to
be validated and to make sure that it is what you are expecting, right? It's not a chunk data, right? So how you will make sure that you are getting the accurate data and not hallucinated data? Okay. As an example, I'll give another example. Okay. Can anybody tell me? I'll just raise a question. Can somebody tell me what I was speaking 1 hour before? What was the topic? What was the topic that I was explaining to you 1 hour before? It is as a human being, it is not possible, right? To tell what exactly Anand was explaining 1 hour before. But if I ask somebody, one among you, can you tell me what are the topics that we have covered in the last few minutes, right? From the start till now, right? So definitely you'll be able to summarize at the high level, right? But if I ask you very specifically 1 hour before, it is not possible, right? So, in order to get a accurate and the right information details available to you, you need to make sure that you are giving the right context to the system so that it can go back, search, and give back the response back to you, right? So your context should be very relevant. If your query, if your database is huge, right, then what the recommendation is to split the data into chunks, right? Say, for example, if you want to read, I'll give another example. If you want to read a particular paragraph from a 10-pager PDF file, right, or 100-page PDF file, your paragraph, the information that you're looking out for is in one paragraph of one page in 100-page PDF file, right? If you give a query to the system, it will definitely take it. There is a very high possibility that you will not get the accurate data that you're looking out for, right? So in that case, the recommendation is to split that 100-page document into different pages, like make a different parts, right? Make 10 parts of your PDF file. I mean to say one part with 10 page, right? Now searching your paragraph in 10-page document PDF file is much more easier, efficient, and accurate unlike when done with 100-page or PDF document, right? And that is where your all these AI algorithms, LLMs, RAGs will come into picture. And if you're using any of the agentic AI tools, you can use those tools and uh, make it happen for you, right? And what is MCP? As I told, right? It is like an interface. You can consider MCP as an interface sitting in between the user prompt and the backend ecosystem from where the data is getting fetched. So instead of making multiple API calls to different systems and applications integrations, you just make one call through your MCP to the MCP server, and then internally the MCP server will uh, do the uh, internal calls to different application, fetch the data for you, and give it back to you. Is it okay so far? LLMs, prompt engineering, RAG, agents, and MCP. Now, one very important point which you should remember, okay? Uh, how many of you know that Google has just launched Gemini 3.0? 1, 2, I'm assuming 1, 2, 3. I'm not able to see the screen. If somebody can call it out, that would be great. Sir, three have raised their hands. Yes, so great. Thank you for the response. So, as far as I remember, Gemini 3.0 got announced launch in October 2025. Exact date I don't remember. So, if I give a prompt to, I'm just taking an example of Google. You can take AWS, Azure, IBM, Oracle, any of the tools or the tools that you are familiar, ChatGPT, any of the tools that you are working with, right? So what is do you think do you believe that the data that you will get from Gemini 3.0, suppose if I give uh, if I'm not wrong, there was a fire in Goa last night, okay? If I was reading news in Times of India today morning, and I came to know there was a fire in hotel in Goa, and if I give a prompt to Chat GPT or say to whom, Gemini or Copilot,
will they be able to give the answer to me that yes, there was a fire in Goa last night in so and so restaurant hotel when 25 people killed and so many people are uh, injured? Do you think you will get that data? No, because not all LLMs are trained with real-time data, right? Every like Gemini 3.0 itself have the data up to January 2025. Okay, beyond January 20, if you are looking for data anything before January 2025, definitely you will get the data from Gemini 3.0 if you give a prompt to the Gemini 3.0. And similarly, if you are giving a prompt to Chat GPT, uh, any idea what is the cutoff date uh, for Chat GPT? If I'm not wrong, it is 2024, right? October 2024. If you are looking out for data, uh, uh, some of you might be uh, having a query like how Anand sir is able to tell it so confidently, because I just did the research today morning itself. And here, this is just an example. Okay, so I can see here the cutoff dates for all, right? Chat GPT, right? Reasoning, the last cutoff date. So if you're giving a prompt to GPT 5 or 5.1, you will not get the data beyond 2024, 30th September. Okay. Similarly, these are the different model names, right? LLMs, you can call it. So whatever example that you are seeing over here, right? GPT 5.5, 5, and if you scroll down, you will see lot many Anthropic, Claude, Gemini, Google, right? Gemini 3, 2.5. See, January 2025 is the cutoff date. And the release date is November. Sorry, my bad. It is November 18th. So, and all these model names are called as what it is called as. Can somebody give me an answer? What is Gemini 3, 2, Claude, Mistral AI? What do we call this? Is it MCP? Is it an agent? What is it? बोलो भाइयों बहनों. Gemini 3 is a model name. हाँ तो क्या उसको क्या बोलते हैं? मॉडल नेम को क्या बोलते हैं? नहीं मालूम. वेरी बैड. मतलब फ्रॉम माय साइड. मतलब I did not do the justice to my role here. So that is nothing but LLM. Okay. So आप जो भी देखते हो ना, GPT, क्लाउड, सोने, ये these are nothing but LLMs. उसी को LLM बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. इधर कहीं डिफाइन किया है. Okay, let me open the other file. So what is LLM? कहीं पे definition दिया है यहाँ पे कहीं? Let me see. MCP हो गया. Yeah, agents. अभी मेरे को भी नहीं, अभी कहीं पे आंसर नहीं मिल रहा था. क्या करेंगे हम लोग? What is LLM? So I will go to Copilot, define LLM with examples. ठीक है, let's see what is the answer I get. ठीक है. What is LLM? It is an advanced AI model trained on massive amounts of text data to understand and generate human-like language. अब इसने examples दिए क्या? हम लोग देखते हैं. It is used for text generation, summarization, translation, query, billions of word, right? क्या बोल रहा है? LLMs की characteristics क्या होता है? Examples of LLMs देखो यहाँ पे दिया है. देखो GPT, Palm, Llama, Cloud, Mistral, Falcon, जो मैं वहाँ पे दिखा रहा था, those are nothing, models are nothing but your LLMs. Real world applications, chatbots, tutoring, report generations, ऐसे. ठीक है? So this is your LLM. So whatever AI related projects that you work on, right? They have to use one or the other models available in the market. So I'm telling again, you don't have to develop any models, LLM models. Everything is made available to you from the well-known enterprise vendors, right? For example, GPT, Cloud, Sonnet, and so forth, right? Nova from Amazon, right? Now, you can also ask me one question. Is there any possibility to make any customization
or is there? Abhi, I have shown you this, right? Is abhi GPT ka, what is the way, right? One of you can ask me a question. Okay, I'll not take much time. Sorry, I have already overshooted. GPT किधर गया? सबसे ऊपर है, right? 25, right? So one of you can say, Anand, I want to continue using GPT, but I'm not getting the data which I want beyond 2024 because I'm in 2025 and I'm looking out for information details from GPT-5, which is related to 25. Is there any way that I can get it? Yes, there is a way to get it. That only after whosoever has come out, whosoever has launched this GPT-5, right? They have to come with an upgraded version that is now current version is 5.1. So they will have to come with the latest updated version, say 5.2, 5.3 or something like that. And then only the cutoff date will be changed to say December 25 or say October 25, something like that, right? So who has to work on it? Whosoever has launched this particular model, LLM, they only have to work on this and come out with the updated cutoff date. Now, how frequently can this be done? Can this be done on a weekly basis, daily basis, or uh, quarterly basis? The answer is absolutely no. The reason behind it is to retrain any model, right? To retrain and upgrade the cutoff date for any model which is there in the market as we speak today, right? It takes lot of processing power and lot of cost is associated behind it. You just cannot think of a scenario where you will just click a button and the refresh will happen. It will be upgraded within a day or two or something like that, right? So lot of background work needs to be done. Lot of processing has to be done. It needs to be retrained with the updated data, and then only they will be able to launch it, and that too with a lot of cost uh, getting incurred behind it, right? It doesn't cost. It doesn't come with a very cheaper cost. So that's a lot of thought process goes behind bringing a new updated version of any models of any LLMs with a new updated cutoff date. So whatever I just spoke, shared with you is all about LLMs and models. And to work on any AI related projects, hackathons and so forth, definitely you will be using one or the other LLM behind the scene, one or the other model behind the scene, which you need to be well versed with as to when it should be used, why it should be used, where it should be used, and at the same time you should also be aware as to how much it will cost to you, because that is also one of the most important parameter that you need to be aware of. It should not happen that you start working with some LLM or a model and it costs you millions, it costs you thousands of dollars, right? Say, as an, I think people have already started leaving the meeting. Hello, is the call over? Okay, so I think that's what I wanted to communicate, because I can see everybody have started leaving. Maybe the session duration is over. Yes, sir. Okay, so thank you for everybody. Thank you to everybody, rather I should say, and thanks for your support and being listening patiently over here on the call. Thank you so much, sir, for this amazing and insightful session. So we will now move to Q&A segment. If anyone have any queries regarding uh, some topics or anything you want to ask from the speaker, you can unmute yourself and ask that question. Is there any doubt or query regarding the session? You can ask in this. अभी भी सब लोगों को ना ऑफलाइन मिलना पड़ेगा पर्सनली, तब मजा आएगा. Yes, offline session की बात अलग होती है. Hello, sir. Hi, man. Yeah, Vedant this side. Yes, Vedant, tell me please. Yeah. Definitely, sir. Offline session भी होंगे and फाइनल हैकाथॉन में तो डेफिनेटली ऑफलाइन मिलना ही है सबसे.
I hope at least the basics a little bit it was useful to everybody. Yeah. यहाँ पे कैसा पता नहीं चलता reactions तो Yes, not. yes. And the session was really amazing. I saw whole session. Mhm. ठीक है, we'll continue, we'll keep in touch, and if anybody has any queries, let them connect, and we'll make sure that whatever information that we shared today. Sorry. When we have get offline session, जब आप बोलो, जब बुलाएंगे तब हम आ जाएंगे आपके ऊपर है आप याद करो, हम पहुंच जाएंगे in which location? अभी वेदांत सर से एक बार बात कर लेते हैं, we can plan something. Okay, sir. ठीक है, तो Vedant, we can do one thing. Whatever content that I was having, right, for today's sessions, we can plan to share it with the team as well if they want to go through it. Yes, sure. And so we will upload the whole session recording on YouTube by evening, so that those who are not joining, they will also see it. अरे ये तो बहुत ये रिकॉर्डिंग मतलब बहुत सिंपल हो गया है, लोग बोलेंगे क्या कर रहे हैं और ऐसा ओके, डेफिनेटली अपन कुछ और प्लान इस पे कर सकते हैं आगे, तो उसका भी एक अपन प्रॉपर रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे. हाँ, तो अपलोडिंग का जो सेशन रहेगा ना, हम लोग देखते हैं, प्रॉपर प्लान करेंगे बाद में. At least we wanted to get the pulse and the feel of the crowd over here in an online session, and then we can plan accordingly. Sure, sir. अभी at least जितने लोगों ने अटेंड किया उनको बेनिफिट मिलने दो, तो at least next time बाकी लोग अटेंड करेंगे. Yes, yes, sir. ठीक है, चलो. And one more announcement, like मुझे और करनी थी, that as everyone know that hackathon is going, and the many message I received from till morning, like when the problem statement release. So सबके लिए एक ये है कि बहुत जल्द प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी रिलीज होने वाली है. तो सर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कुछ बोलना चाहेंगे लोगों को कि कैसा रहने वाला है और क्या रहने वाला है? We already we are overshooted by time. We can let them know later offline. Is that okay? या मतलब लाइक हम लोग इसका एक प्रॉपर एक छोटा सा वीडियो बना के डालने वाले हैं. So we can discuss and we can let the team know later offline with respect to the problem statements and the hackathon related stuff. Definitely, sir. है ना? Yes, sir. In which location? What? Hello, sir. Yes, yes, sir. In which location? The hackathon is going in Bhopal itself in the month of January. And before that, we have something exciting for you all. The Selja is explaining some more events with you. Details will come in the group. What? Hello all. So as Vedant shared about the hackathon, offline session will take place in January, and registrations are now open. You can register via Unstock, and I will share the link of registration in the chat box. So the last day to register for the hackathon is 15th of December, and for the submission of your PPT is of 20th December. So you can first register, and your team should contain 2 to 4 members, minimum 2 and maximum 4. It's the limit of the submission of PPT and teams. So you can submit your PPT on the Unstock, and all the details regarding deadlines and PPT is already on Unstock. And if you have any query regarding that, you can ask. Registration link is shared in the chat box. You can register via this link, make a team, submit your idea or PPT. PPT guidelines are already shared on that portal.
If you have any queries, you can ask. I think we should appreciate everybody's time coming on Sunday and spending almost 2 hours over here. So we really appreciate your time, team. सर थैंक्स टू यू सर कि आपने मतलब इतना अच्छा सेशन दिया उसके लिए भी Yeah, welcome, sir. it was really amazing and so much knowledgeable. Okay. Thank you, everybody. I think we should disperse. Yes sir. In, Thank you sir. Yeah, in the thank month, you, everybody. Bolo, Mayank. in the month of January, date goes for the webinar. The date will be disclosed soon. Hello. So, The rest, if you have any more query, you can connect us on social media as well. Okay, sir. thank you. Yes sir, you say anything? Thank you so much, all the participants and sir, for joining the session and giving that insightful thoughts about the topic. Thank you, Sarajay and team as well.